Shreya has just now pointed out that we are going to discuss the dynamic 5 C's of happiness. Now, here I would like you all to, appreciate one thing, that one particular change is a cause of happiness as well as cause of, dissatisfaction, anxiety, sadness. So it depends upon you how you look at it. Okay. The first C I would like to discuss. So you have to critically analyze when I'm discussing the changes, because these changes, I'm talking about the 5 C's. One is culture, another is competition, another is climate change, then the change in the character over the period of time. As you grow old, your character also changes, and the choices, whether it is electronic goods or any life choices, they also change. They're not fixed. They change over a period of as the time passes on. Okay, so we have to minutely see that how to understand these changes and how to consider these changes as a golden opportunity for you rather than a source of anxiety for you, that since these are changing, what to do. So it's a very interesting area. So I hope that all of you would contribute your viewpoint and your experiences also. Let us take the first C, culture. The latest example before us is hijab. Okay. Today in the newspaper, I read Times of India editorial. It was written that nowhere it is mentioned in any Quran or something that this particular act would remain forever. Okay. Things are changing. Earlier we used to have Sati Pratha. Okay. We used to have so many, norms which we changed. Even in Muslim, there was, triple talaq and things like that. Not a good thing. If you see in the Afghanistan, etc., Pakistan also, the condition of women is not very good. Why should they be given, ample freedom as men are enjoying or other Hindu counterpart are enjoying? So we need to look at things in this perspective. Okay. So similarly, you apply your mind that the work culture is also changing. Where work culture changed and we accepted it, online mode. Okay, work from home. All these things we had to accept. Okay, so culture is changing. New things are coming. You need to welcome that. Okay, if new things will not come, then your scope for creativity will end. Okay, you can come out with new ideas, new things only when things are volatile, it's changing. So this is about the culture. Any question we can discuss. I'm not going to say that I'll give you the most satisfactory answer, but we can always open for discussion. Second is the thing which is in a dynamic state is competition. You never know, a new competitor comes. Okay, earlier you were planned, even in Indian Airlines, nobody knew that Tata will come, okay, as a player, major player. So a new competitor might come at any moment. That can create several problems for you, but at the same time, if you take it positively, you have many things to learn from your competitor. Okay, and so that you also can improve. Okay, with a collaborative effort you can make certain improvements. And the third is the climate change. Okay, climate change. So one month climate is advancing, or global warming or things like that. We need to adjust. Okay, we cannot change the climate, but we have to change ourselves.
So these are the inner dynamic state. Okay, similarly, character. In the child, you were different. Now you are different. In the old age, you will be different. You will be more spiritual. You will think of society and other people. I mean, the same person, but the behavior, the character will change. Okay, uh, we used to hear from someone that while you are young and you do not think about society or socialism. You are not a socialist while you are young. That means you do not have a heart, and you are a socialist even after do your graduation, or then also if you are socialist, that means you do not have a head. Okay, so heart and head both are important. Okay, so character keeps changing, and then choices. You see, several choices have come to you. Electronic gadgets or whatever in any area. Even in employment area, you have the several choices have come. That has made the world very wonderful. Okay, so many opportunities which never existed earlier, they have come now. Right now, we need to appreciate all those things. If we start appreciating it, it becomes a source of happiness. If we start cribbing over it, and then the same thing is a source of unhappiness. Okay, so our question should be that how to transform them. I mean, all these changes into a source of happiness and a source of prosperity. Yeah. So that is the thing. How do we do that? How do we do that? To me, there are three things that we need to develop. One is learning agility. Learning agility. Even in this happiness class, uh, our focus has been that we all must learn how to develop the ability to be happy. Okay, so everywhere, even in the classroom. Okay, if you are able to learn a situation, a problem properly, then you will come out with solution. Okay, so as things are changing, as the environment is changing, you need to be more focused, and you have to develop the learning skill, maybe listening skill. You have to be have more listening ability, and then observation ability to observe things. This we have to enhance, so that we are able to cope up with any kind of change. With all those 5 C's are in a dynamic state, but we are able to change with all these things, and that will make us happy. That will not keep us stressed, or that will not give us any kind of depression. This is one, learning agility. Another is the emotional agility. Emotional agility is very important, because what happens that sometimes you are at a very high position doing so good work in an organization, and new layoff. Tomorrow you come to know that you do not have any job anymore. So emotional agility is very important, how to cope up with that. And there is a solution to everything. Okay. Similarly, the technology is changing every day. So how to cope up with technology, like from offline to online mode. Everything changed. So those who are not familiar with technology, they had to come up emotional agility. Okay. And similarly, new virus, you do not know what kind of virus will come tomorrow. It's all uncertain. So how to cope up with uncertainty, emotional agility we should develop, and that is what we have been talking, all throughout in our syllabus in this course. Okay. And the third is transition agility. Resilience.
to the transition taking place. Okay, you are becoming more prosperous. The technology is growing at an exponential rate. So how to accept this transformation? Even globalization is a new thing. So how to do that? Okay. Now you might share my submission is that the world is same. The world is same, but different people experience different realities. Okay, I think to be noted. Okay, different people experience different realities. The world remains same. I give you an example. Some people consider this world, this place, as a safe place to live. Okay, whereas you will find many people who consider this place as a dangerous place, very highly insecure. World is same for both, but some are considering it as a safe place, some are considering it as a very dangerous place. Okay. Similarly, world is same, human beings are same, but some believe in homogeneity, that all are same. The color of blood of Hindu, Muslim, everyone is same. Okay. And some are considering, no. There is a lot of difference. They differentiate human being on the basis of caste, creed, color, everything. Okay. So human beings are same, world is same. Different people are experiencing different realities. Okay. Similarly, some people would consider this place as alive. Okay. Alive. It's not a dead place. Okay. Whereas some people, on the other hand, would consider it as a mechanical, highly mechanical. People have become robots. Okay. And they are behaving in a like a machine. So this concept, so world is same, situation is same, people are same. Okay. But some people are perceiving it in different way, some people are experiencing it in a different way. Okay. Similarly, very important thing, that some of us consider it, the world, as a playground. Okay. It's a playground, you have to play the game, whereas some people consider it as a battleground. Okay. Highly competitive. Okay. You have to win the race. Okay. So world is same, but people are experiencing different realities. This is something which we need to ponder upon. Okay. For some people, the world is enticing, highly enthusiastic. But for some people, it is dull, it is boring. Okay. So is it not something upon which we need to ponder upon? And we should see that why it is so. It is essentially because of our poor attitude, poor learning, poor agility. Okay, we are not able to cope up with the changes that are taking place in day-to-day life, and inevitable changes. These 5 C's have to change. Climate has to change. All these 5 C's have to change. So how can you be happy? You can only be happy when you develop agility of these 3. And that is LET. L is learning agility, E is emotional agility, and T is transitional agility. If we develop these things, then there is no reason why we should feel worried or we should feel stress. Rather, we develop a wonderful capacity, to grow and prosper, because every change gives you a new opportunity to excel, to create. If imagine of a situation when no change is taking place, then that means all those who have given particular idea, only they will survive. You do not have any scope. So until and unless
Old things become redundant, obsolete, new things takes place. I mean, new people cannot have, uh, you know, their source of, living, as well as, they cannot have excitement, a proper satisfaction, whether it is job satisfaction or life satisfaction. You cannot have unless, you know, the entire environment is in flux, in a volatile situation. So this is a great learning of all of us, that we are considering the change as a good news, as a welcome change for all of us, so that so that we prepare ourselves properly for it, and we enjoy everything. We dance rather than cry. Okay, that's all. तो अभी बहुत राइट एप्रोप्रिएट कंडीशन हम देख सकते हैं. द वर्ल्ड इज गेटिंग बैक टू नॉर्मल. स्टूडेंट्स आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट कि अब ऑफलाइन आना होगा. पीपल गोइंग टू ऑफिसेस आर क्रिबिंग आउट ऑफ इट. एक टाइम पे जब वो बोल रहे थे कि हाँ ऑफिसेस खुल जाने चाहिए, दे आर क्रिबिंग अब क्योंकि ऑफिसेस खुल गए. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और जहां तक डायनामिक, द वर्ड डायनामिक लिटरली मीन्स टू बी एवर चेंजिंग. सो बहुत इम्पोर्टेंट है फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर एंड अडेप्शन टू चेंज. दैट वो फ्लेक्सिबिलिटी की हाउ मच फ्लेक्सिबल आर वी टू अडेप्ट द चेंजेस अराउंड. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो थ्योरी है वो बिल्कुल हमारे लिए. दैट हाउ कैन वी पॉजिटिवली एक्सेप्ट दोस चेंजेस अराउंड अस. और अभी तो सिचुएशन बहुत ही एप्ट है बिकॉज वी आर गेटिंग बैक टू नॉर्मल, बट उसमें भी अभी मेंटल प्रेशर आ रहा है इन गेटिंग बैक टू आवर नॉर्मल लाइफ. Another important thing, that when we are talking about changes, your state of happiness, never think that it will be there forever. Okay. Just now, after prolonged lockdown, when students have joined the college, all of us can see the euphoria, the enthusiasm, as if they have they have broken free their prison, and they have joined a new world. Now, we cannot think that this state of mind will remain for a long time. Okay. So what I mean to say is that whenever you also feel excited, your happiness level is high, try to encash it. Even I was talking to several teachers that this euphoria of a student needs to be encashed. Otherwise, the withdrawal symptom will occur, and they will be back to square. So even it applies to all individuals. Find excitement in the moment and try to encash it. Many of our students in the happiness class also, they took it a very in an indifferent manner, as if something miraculous will happen, and the result was that they could not be very much happy with that. Partly the reason has been that they have not been contributing their views and thoughts. They have not been interacting with the resource persons. This is one reason. And another reason is that they have never tried to implement those principles into their life. Okay. If you do not implement, then you do not get result. All these things that I am telling you, agility of these three things, these agility you will develop only when you implement those things in your daily wakefulness. Okay. If you just listen, appreciate my lecture, and say, okay, I fully agree with this thing, that is not going to serve your purpose unless you execute them in your daily life. This particular thing has been bitterly missing in our happiness class, and that is why I'm sorry to say that we do not get enough motivation to to continue with this kind of courses. Okay.
Okay, and because unless our time has got value, our energy has got some importance, unless we think that it is justified and people are benefiting out of it, how can we continue like this? This has been a kind of tragedy for all of us. Yeah, any question, any views? Any personal experience sir ने जो 5 C's के बारे में बताया, and we also discussed how can we convert those जो भी सर ने बताया about culture, about the climate change, about acceptability, how can we convert them into happiness? But here every answer is right. So any personal experience कि आपने कुछ experience किया हो, that इन सब को यूज करते हुए आपकी लाइफ में कैसे हैप्पीनेस या ट्रांसफॉर्मेशन या प्रोस्पेरिटी या एनी पॉजिटिव चेंज, हाउ हैज इट अकर्ड? एनी पर्सनल एक्सपीरियंस जो आप सब शेयर करना चाहते हैं हम सबके साथ? Yeah, good evening. Am I audible? Yes, Priti ma'am, you are audible. Yes. So good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. So maybe I would just like to add that I think the last 2 years especially have been immensely difficult for everyone. But even in these difficult times, I think those of us who have actually taken even small opportunities to maybe learn or do something different, or as sir mentioned, adapt and accept change, develop on emotional agility. That has been, I think, one major plus point, even though it is it's a difficult time. So for my self, I can say that we have actually learned many things. I'm not just talking about work per se, or as we have gone to online mode with respect to work, or if we talk about kids, they have gone back to they have gone to online mode even for school. So we learned to do that along with them, and how can we contribute in our child's growth when they are in online mode, and if it is for that matter family, how to be emotionally connected with each other in these difficult times. Maybe parents are in some other city, and maybe if your children were somewhere else, and it was difficult to even meet initially, maybe initial 5 to 6 months. So how to be emotionally connected, how do we improve on that emotional or adaptability, you can say, accept change, all that has gradually happened. And yeah, so for me, I actually learned a lot by doing many courses, even not just happiness, but otherwise also I've done many courses which otherwise I wouldn't have done. I maybe because of the travel and all. So maybe that's one thing, maybe not very great change, but yeah, minor steps, and that has been immensely satisfying in a way. Yeah, so yeah, that those small things definitely have added to the overall experience, or to accept change and move forward. Thank you so much, ma'am, for sharing your experience. And I must say that these are not little steps. These are like acceptance is a very big thing. Priti, I would just pick up your one word. You began with, the word saying, I want to add. Yes, sir. This tendency of adding something to the existing stock is, key to success. Value addition. As a teacher in the college, what do? A student coming from after passing their 12th class, if they go to the job, they will get 10,000 rupees. We add value, and after graduation, they get 1 lakh rupees. 90,000 is our value addition. That is the source of our happiness. So this is a very good, strategy that we all need to think in terms of adding. That gives you immense satisfaction and a sense of purpose, a sense of meaning, everything. So I welcome
Preeti ji, and I must tell you that I have found you as a devoted student right since beginning. Despite a lot of difficulties, you have been a regular, and you have a tendency to respond rather than keeping quiet. So this is a good thing that you should take note of, and try to develop upon that. Okay, that is your these are your assets that I have spelled out. Okay, all the best. Good. Sure, sir. Thanks, sir. So that's what, sir. Being a teacher, I think I always think, even if I'm taking the same course third, fourth, or fifth time, I would like to add one new thing, and that will be a learning for me and something new for the students also. Though everything is same, maybe we should just keep on adding on a daily basis, whatever it is. Your sharing of your this particular thought, has added to our learning, all of us. Okay, so this is the beauty. If you share your thoughts, then you educate people. If we get educated, I am getting educated by your this sharing of thought. This is the beauty of everything. Yeah, please. Anyone else who would like to share the experience? Thank you, Priti ma'am. It was a valuable one. गुड इवनिंग सर. सर Yeah. अभी तक बहुत सारे कोर्सेज किए हैं, लेकिन ये पहला कोर्स है जिसमें कि हम अपने बारे में अपने से रिलेट कर पा रहे हैं, और लग रहा है कि हम इस पूरे प्रोसेस का पार्ट एंड पार्सल हैं. फॉर एग्जाम्पल, आज आपने कहा कि जो हम चेंजेस होते हैं या हमारा कल्चर है, वो बहुत कुछ हमारी हैप्पीनेस को डिफाइन और डिसाइड और मतलब उसको अफेक्ट करता है. तो मैंने खुद ये महसूस किया है, क्योंकि माय फादर वाज इन एयरफोर्स. तो मेरा जो जन्म हुआ वो मद्रास में हुआ, और फिर बहुत सारी जगह से होते हुए, बट आई गॉट मैरिड इन अ फैमिली जो कि रूरल बेस्ड है. तो वहां पर जब शादी के बाद मैंने देखा तो सब कोई घूंघट में था. तो मतलब आई गॉट मैरिड अराउंड 21 इयर्स बैक. तो मैंने भी वो घूंघट कर लिया, क्योंकि सबने ही किया हुआ था, तो इवन आई डिड दैट. और अभी रिसेंटली सडनली, मतलब इतने साल तक उस घूंघट में रहते 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 ना, सडनली वन डे आई डिसाइडेड कि नाउ आई एम नॉट गोइंग टू डू इट. और मैंने वो उतार दिया, और उसके उतरते ही आई फेल्ट सो लिबरेटेड. मीन्स आई कैन फील द चेंज. तो ये जो चेंज है ना, ये वाकई बहुत लिबरेटिंग और बहुत हैप्पीनेस देता है, और एम्पावर भी कर देता है कई बार. थैंक यू सर. Okay, Hare Krishna ji is another devotee. I appreciate. She has always been reacting to whatever she is listening. How wonderful! You are a teacher. The greatest satisfaction for a teacher is when he finds students brighter than him or her. Okay, there is a saying like, examinee is better than examiner. Okay, examinee is better than examiner. So that situation, if somehow we are able to achieve in this class, as you reflected, as Preeti ji reflected, these are symbols that students have learned more than the teacher. So if that kind of atmosphere, we are able to create, it's a great thing. It's a great thing. I am really very indebted to you, and that you are accepting that you have learned a lot of things. I should say that you have also taught several things. Okay, good. All the best. Thank you, ma'am. It was really like listening from your experience was really overwhelming, because it's not a easy thing to do, but आपने वो किया, and आपके एक्सपीरियंस से शायद कितने लोगों को कुछ भी नया करना, या कुछ भी आउट ऑफ द कंफर्ट जोन निकलना, या कुछ भी जो अपने लाइफ में ट्रैप है वो निकलने का मोटिवेशन मिला आपसे. बिकॉज इट्स नॉट अ लाइक
coming out from somewhere which is something which is already a very deep part of your life, it's not at all easy. And सर it's like एक चीज और मैं ऐड करूंगी कि जब मैंने जिम जाना शुरू किया था ना, तो उसमें भी मुझे खुद से बहुत जूझना पड़ा था. मतलब मैं करीब 1 साल से मैंने जिम के कपड़े खरीदे हुए थे, लेकिन उन कपड़ों को पहन के और घर से निकलना, इट वाज अ बिग चैलेंज फॉर मी. एंड देन सडनली वन डे आई वाज मतलब मैंने बस डिसाइड कर लिया और मैंने वो पहन लिए और मैं अपने स्टेयर से नीचे उतर गई जूते पहन के. एंड नाउ इट्स अराउंड 3 years. तो सर वो भी एक काफी टफ वो था, decision था, but now I'm enjoying the fruit of that decision. Yes, enjoying. Good. anyone else who would like to share the experience? सर मैं कुछ कहना चाहूंगी. I was waiting for you. Exactly, ma'am. We all were waiting for you. एक्चुअल में सर मैं अब जीवन को ना बड़े मतलब बहुत ही खुशहाल रूप में अब मैंने देखना शुरू कर दिया है. पहले मैं बहुत ही अपने आप को ना रिस्ट्रिक्टेड कर रखा था हर चीज में कि नहीं ऐसा होना चाहिए. बहुत सारी चीजों को एक्सपेक्ट करती थी, माइंड में इतने सारे थॉट्स चलते रहते थे. तो एक सोच बन गई थी कि नहीं शायद सब गलत हैं, हमें बहुत बच के रहना चाहिए. एक्सप्रेशन जो है मेरा बहुत जीरो हो गया था. इवन सर जब आपसे ये फर्स्ट मैंने ये जो स्कूल ऑफ हैप्पीनेस जब ज्वाइन किया था कोर्स, तो उस समय मेरी सिचुएशन ये थी कि शायद मैं अपने जो मेरे अंदर जो विचार हैं उनको मैं अच्छे से शेयर भी नहीं किसी से कर पाती थी. तो आज सिचुएशन ये है सर कि भी मैं बहुत खुश रहती हूँ. जैसी भी सिचुएशन हो, मुझे लगता है कि जीवन इतना अच्छा मिला हुआ है, पर हम अपने विचारों से कहीं ना कहीं उसे दूषित कर देते हैं. तो आज मेरे लिए हर एक पल बहुत इंजॉयबल है और वो ही मैं सबके साथ अपना शेयर करती हूँ, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो मेरे प्रोफेशनल हो, स्किल्स हो, कहीं पे भी हो, तो मैं बहुत खुश हूँ. बहुत बढ़िया. सुजाता जी, आपको अगर याद हो कि एक क्लास हमने लिया था कि अपने को आप मतलब हाउ कैन यू मेक योरसेल्फ द बेस्ट फ्रेंड. ओके, तो कितनी सिंपल सी बात है कि आपका जीवन कितना अच्छा हो जाता है अगर आपको हमेशा 24 घंटे लगे कि यू आर लिविंग विथ अ वंडरफुल पर्सन. तो ये बहुत ही सहज और सरल बात है कि ईश्वर ने जो भी दिया है, अनोखा दिया है, यू शुड वेलकम इट. Gratitude. हाँ, तो यही बात है. और दूसरी बात थोड़ी सी ये कि जब आपको ईश्वर ने इतना दिया है तो यू शुड पे बैक ऑल्सो ना. बिल्कुल लेते रहोगे, पूरी जिंदगी लेते रहोगे. जी सर. तो थोड़ा सा जब आप ग्रेटिट्यूड, थैंकफुलनेस के मोड में जाते हो तो वो आपको और आनंद देता है. एड्स टू योर प्लेजर. ठीक है, ओके. थैंक्स अ लॉट सर. Thank you so much, ma'am. Anyone else who would like to share the experience? So we have a response from Merlin. This course is actually providing us a hub of knowledge, which is full of happiness. That is where this course is actually helping us to achieve our goal and our objective. Well, Thank you, Merlin. Well, I would also like to know someone who has not been able to be happy. Okay, कुछ ऐसे लोग अगर हैं तो शायद हमें और ज्ञान देंगे. Anyone who has some reservation that yes, the person tried level best, but it's not, very effective. Yes, any feedback is most welcome. Or any simple suggestions that you all want to give. Yes, that is important.
सर आपने बहुत शुरू में ना एक बुक बताई थी, मैं उनका नाम भूल गई हूँ, बहुत फर्स्ट और सेकंड उसमें ही बताई थी आपने, मॉन्क, उसके नाम में शायद मॉन्क है या एक, हाँ वो जय लाइक अ मॉन्क, थिंक नहीं, लाइक अ मॉन्क। हाँ ये जय शेट्टी की है, JAY। हाँ जी हाँ जी हाँ जय जी, वो शेट्टी मैंने की है। सर नेक्स्ट वीक ही वो खरीद ली थी, आपके बताते बताते ही मैंने ऑर्डर कर दिया था। तो सर मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस तरह की कुछ और बुक्स को आप सजेस्ट करिए। ओके, वंडरफुल। इट इज अ वंडरफुल बुक। अच्छा, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। व्हाट वी हैव थॉट, यू आर ए स्टूडेंट, मेरी क्लास है, आप लोगों के साथ नहीं शेयर करूंगा तो किसके साथ शेयर करूंगा? यू नो व्हाट वी फेल्ट कि इतना हम मेहनत करते हैं, वैरायटी लाने की कोशिश करते हैं, और इसमें कुछ कोड ऑफ कंडक्ट भी हमने, एथिक्स भी पालन कर रखा है कि जो हमारे प्रोफेसर कॉलेज के हैं, they cannot accept, they cannot expect any monetary rewards. तो उस हेल्दी नॉर्म्स के साथ हम चल रहे हैं। जो बाहर के गेस्ट को बुलाते हैं उनको मैं देता हूँ पैसा, क्योंकि पैसे की कोई कमी है नहीं। तो लेकिन ये सारा एक्सरसाइज जो है, मतलब आज आप कह रही हैं कि बहुत अच्छा लगा, फायदा हुआ, ये हुआ, लेकिन जिस तरीके का अटेंडेंस देख करके बहुत एनकरेजमेंट नहीं हुआ। तो मैं बच्चों को दोष, आपको दोष नहीं देता। हमेशा हमें लगता है कि जो हम डिलीवरी दे रहे हैं, जो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, द वे वी आर कम्युनिकेटिंग विथ यू, इवन इन दैट वी नीड टू हैव सम इनोवेशन। ठीक है, सीधे तौर पर अगर हम सरमन्स दें कि झूठ मत बोलो, ये करो, वो बहुत ज्यादा असरदार नहीं होता है। एंड यू ऑल आर टीचर्स, यू मस्ट बी नोइंग कि बच्चों पे भी नहीं होता, किसी पे भी नहीं होता। एंड 2 मिनट की, महात्मा गांधी बहुत अच्छे थे, लेकिन वो महात्मा गांधी दूसरा आदमी बन नहीं रहा, क्योंकि आपने तरीका ठीक नहीं चुना। तो व्हाट वी हैव थॉट कि इन अ वेरी स्मूथ मैनर, एक अगर हम डॉक्यूमेंट्री, एक मूवी बनाए, you know, where we convey these messages only, but उसका entertainment value हो, it's not a very serious kind of discussion. हम लोगों को मोस्टली, मेरा लेक्चर तो ऐसा ही होता है कि थोड़ा सा बहुत ज्यादा सीरियस बनाता है माहौल को, तो उसको लाइटर मोमेंट में बच्चों के सहारे, some people are working on it, and मेरा सबमिशन है, all of you are teachers, कि जो स्क्रिप्ट हम ही ने लिखा है स्क्रिप्ट को, उसमें मैंने देखा कि कॉलेज में 3 तरह के बच्चे होते हैं, पीयर ग्रुप। एक ग्रुप जो होता है वो पूरा मॉडर्निटी में लिप्त रहता है, फन, पार्टी, एवरीथिंग, ओके, कॉमनली वी सी इन ऑल द कॉलेजेस। सेकेंड लॉट जो होता है ग्रुप बच्चों का, वो वेरी पैशनेट अबाउट कैरियर, मार्क्स, कंपटीशन। ठीक है, पैसा आएगा तो हमारी लाइफ में हैप्पीनेस आएगा। सेकंड इज टोटली कमिटेड टू स्टडीज, उसको मजा नहीं आ रहा पार्टी में, पार्टी छोड़ करके वो पढ़ाई कर रहा है। देयर इज अ थर्ड लॉट आल्सो विच इज नाइदर पार्टिंग नॉर स्टडिंग। उसका है कि किसी की सेवा करो, वो NSS ज्वाइन करता है, वो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल ज्वाइन करता है, ओल्ड एज होम जाता है, उसका शौक है कि हम बेहतर जिंदगी करें, समाज, ये वो सारी अच्छी भावना है। इसको कहते हैं गुडनेस मोड। फर्स्ट हुआ इग्नोरेंट मोड, दूसरा हुआ पैशनेट मोड, थर्ड हुआ गुडनेस मोड, इग्नोरेंट, पैशनेट एंड गुड। तो ये 3 तरह के बच्चे होते हैं। तो इन तीनों में फर्स्ट 2 को तो हमने छोड़ दिया, थर्ड को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसी पर हम कुछ स्क्रिप्ट तैयार करना चाहते हैं। यू आर आवर सीनियर स्टूडेंट्स नाउ, तो आप लोगों को अगर कोई सजेशन हो, कुछ तरह की बात हो, तो यू आर मोस्ट वेलकम। एंड दिस इज आवर आइडिया, इनोवेशन, एक नया तरीका का, दैट्स ऑल। We are working towards that documentary and hope we'll present before you soon. If you have any suggestions, आप दे सकते हैं। सर उस डॉक्यूमेंट्री
से रिलेटेड तो नहीं है, एक और सजेशन है सर। अभी कुछ टाइम पहले ना, कुछ बल्कि 3 साल पहले एक आर्टिकल था द हिंदू में, डी क्लटरिंग, अ वे ऑफ लिविंग हैप्पी लाइफ। तो सर वो मैरी कोंडो एक जापानीज ऑथर है, और वो ये रेड कारपेट सेलिब्रिटी भी हैं, और वो सिर्फ ये सिखाती हैं कि हम अपने घर से जो जरूरत का सामान नहीं है उसको कैसे बाहर निकालें। एंड शी इज ओवर बुक्ड फॉर 6 months एंड शी इज चार्जिंग $2,000 पर विजिट, एंड और आपको आने जाने का भी देना पड़ेगा। तो सर वो जो एक जो डी क्लटरिंग था ना, वो वाकई मतलब इट्स मैजिकल, एंड आई हैव फॉलोड। जरा ऑथर का नाम बताएंगे एक बार, मैं नोट कर रहा हूँ। सर MARIE, मैरी, KONDO, अच्छा, ठीक है, मैरी कोंडो। समझ गया। सर ये इन्होंने 3-4 बुक लिखी हुई हैं। मैंने पहले वो न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ा, फिर इनकी बुक खरीदी, फिर दूसरी खरीदी, फिर तीसरी, फिर मैंने जिससे इन्होंने इंस्पिरेशन ली थी मैंने उनकी बुक भी खरीदी। और सर वाकई मतलब ये इतना इतना लाइफ को इतना खुशहाल बना दिया इसने मेरी। पहले जब मैं एक साड़ी से फॉल मैच करने में भी 2-3 दिन भी लगा देती थी कि मतलब मुझे 100% मैचिंग चाहिए, और घर में कितना सामान होने के बावजूद मुझे कुछ मिलता नहीं था, कुछ दिखता नहीं था। अब मैंने सामान कम कर दिया है, तो मतलब मेरी लाइफ इतनी आसान हो गई है। तो सर अगर आप कभी आपको कभी ऐसे लगे तो मैं इस पे कंट्रीब्यूट करना चाहूंगी। ओह यस, हरे कृष्ण जी, ऐसा है कि आपने इतना मेहनत किया, मोस्ट ऑफ द थिंग यू हैव एक्सपीरियंस्ड आल्सो, जिम जाने से लेकर दुनिया भर की चीजें आपने, तो ठीक है, हो सकता है कि वो अगर 20 है तो आप 19 हैं, 18 हैं, नो प्रॉब्लम, 18-19 का भी चलता है। तो व्हाई कांट यू बी द एसेट? अगर आप उसने इतना मेहनत, इतना इतना टाइम आपने दिया है उसको पढ़ने में, समझने में, लिखने में, एंड यू आर सो इंस्पायर्ड, तो उसका जो सेंट्रल आइडिया है उसको लेकर के आप आइए, इस डॉक्यूमेंट्री का आप डायरेक्टर बनिए, एनीथिंग, इट्स ओपन, हम लोग तो कोई क्लोज्ड है नहीं, ठीक है। यू कंट्रीब्यूट एंड यू हैव ऑल द राइट टू डू दैट, यू नो। एंड तो आप भारती कॉलेज के हैं, कभी भी आपको बुला करके हम लोग, and we would like to be benefited, है ना, बल्कि सर इस पे मैं असल में लोग इतनी जल्दी इस आइडिया से ना इम्प्रेस नहीं होते, क्योंकि अभी तक तो हम एज ए होर्डर्स ही जी रहे हैं। मतलब मार्केटिंग पीपल कहते हैं कि ब्लू, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, नेवी ब्लू, पर्पल ब्लू, तो ब्लू के नाम पे ही हम 10 प्रोडक्ट खरीद लाते हैं। जब खरीद लाते हैं वो वन टाइम ट्रांजैक्शन हो गई, लेकिन उन 10 प्रोडक्ट को रखने में, उनको मेंटेन करने में, मतलब वी आर स्पेंडिंग टू मच ऑफ आवर टाइम। तो टाइम तो लिमिटेड रिसोर्स है और नॉन रिन्यूएबल भी है। तो दिक्कत जो यहाँ पर आती है ना, पर ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसके बहुत ज्यादा टेकर्स नहीं है, पर एक बार जो इसको फॉलो कर लेता है ना, वो उसको लगता है यही जन्नत है, यही दुनिया है, यही स्वर्ग है। तो सर इस पे मैं एक वर्कशॉप भी, अगर कभी ऐसा कुछ होता है ना, मतलब मैं इस कॉन्सेप्ट को ग्रो करना चाहती हूँ, इसके फॉलोअर्स मैं चाहती हूँ कि लोग इसको सीखें और जीवन जीना सीखें एक्चुअली। और सर जब मैंने इसको फॉलो किया था ना, तो मेरे अड़ोस पड़ोस के लोग आके मुझे कहने लगे थे कि आर यू शिफ्टिंग, मतलब मैंने घर से इतना सामान चलता कर दिया, और करने के बाद मुझे जो खुशी मिली और जो अचीवमेंट्स मिली, I can't just make a list of all those achievements. अगर कभी ऐसा होता है तो I'll be too happy to be associated with. I believe there are a lot of things to learn from you. Okay, ये सिर्फ थोड़ा सा इसको हमें भी सोचना है, आपको भी सोचना है कि इसको ना पिक्चराइज करना है। सीधे तौर पे जो है हम अगर बात करते हैं तो हो सकता है कि हम पढ़े लिखे मैच्योर्ड हैं तो टाइम दें उस पर, ठीक है। लेकिन अगर आप
जिसको बदलना चाहते हैं, यंग जनरेशन को, तो थोड़ा यंग जनरेशन की वी हैव टू बी इनोवेटिव इन वी हैव टू हाउ टू कम्युनिकेट विद देम. ओके, तो थोड़ा सा इसी आइडिया को अगर इफ यू ट्रांसफॉर्म इट इनटू दैट, तो वो आपका वैल्यू एडिशन हो जाएगा. यू विल आप कहोगे कि मैं इट्स माय क्रिएशन. क्रिएटिविटी वहां आपकी आई, एंड क्रिएटिविटी जब आएगी तो दैट विल गिव यू एडिशनल सेटिस्फैक्शन टू यू, रादर देन सेम थीम को उसी तरीके से हमने कह दिया. अप्रिशिएट कर देंगे, ताली बजा देंगे, लेकिन फिर उसको बहुत ज्यादा समय तक वो दिमाग में रहेगा नहीं. ठीक है, इट्स सिंपल. लाइक कोई भी मूवी अगर मैसेज देता है हमें तो वो ज्यादा समय तक रहता है. बड़े स्क्रीन वाले, बड़े पर्दे का तो हम लोग नहीं कर सकते, छोटे पर्दे में छोटा छोटा क्लिप करके एज इफ मतलब दैट मूवी कैन कोट यू सेइंग ऑल दीस थिंग्स व्हाटएवर यू सेड जस्ट नाउ. इसमें बड़ी बड़ी बात है नहीं, इतनी ही बात तो कहनी है कि हमने ये कर दिया, पड़ोसी ये समझ रहे थे और ये कर रहे थे. दैट विल बी वेरी इम्पैक्टफुल, वेरी इम्पैक्टफुल. ठीक है, थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. मैं भी इस पे कुछ और फर्दर सोचती हूँ. वंडरफुल, वंडरफुल. थैंक यू सर. बहुत बढ़िया. श्रेया, वी हैड इनफ. ये सारी ऐसी बातें हैं जो कि बहुत ज्यादा समय तक नहीं बात की जानी चाहिए, बिकॉज इट इज वेरी हार्ड हिटिंग. दीज आर ये मौलिक It takes बातें. time to digest. हाँ, उस पर थोड़ा सोचना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, रादर देन डिस्कसिंग. तो अगर कोई somebody who doesn't want to share anything, तो we need to close here. Okay. Thank Sir, you all of you. Yes, ma'am. हाँ, मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगी कि आपने कहा ना सजेशन के लिए आप लोग वो डॉक्यूमेंट्री तैयार करना चाह रहे थे, तो जी. वहां पे मुझे जस्ट अ सजेशन कि आपने कहा जैसे कि सीधी बात अगर सीधे से कहेंगे तो बच्चों तक नहीं पहुंच पाती है, वो थ्रू स्टोरी टेलिंग अगर किया जा सके. Oh yes, yes, yes. मीन्स कुछ अच्छी स्टोरीज अगर ऐड किया, मीन्स कहानियां ऐड किया जाए तो मे बी दैट इज मोर इम्पैक्टफुल. तो we totally agree with you. उसी स्टोरी टेलिंग को थोड़ा सा और हम लोग एडवांस कर रहे हैं कि इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स, है ना, स्टोरीज जी. रहेगा. हाँ, लेकिन आई एग्री विथ यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर सजेशन. थैंक यू. Anyone else? Thank you so much, sir, and thank you so much all the participants for participating, because our efforts are only valued if you participate, and we feel encouraged if you participate and interact. You know, all participants. श्रेया, एक चीज मैं और शेयर करना चाहूंगा. माय क्लासरूम एक्सपीरियंस हमारा शुरू से, मतलब आई हैव नॉट बीन एबल टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. दैट इज प्रॉब्लम इज स्टिल इंटैक्ट, कि बच्चों से का मुंह खुलवाना, वन साइडेड, दे विल नॉट ओपन अप सो इजिली. बहुत मेहनत करना पड़ता है टीचर को कि ये बच्चा जो है कुछ अपनी बात भी कहे. तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने बहुत मेहनत करी, तो आज कुछ बच्चे मुंह खोल रहे हैं धीरे धीरे. सो आई एम रियली वेरी हैप्पी that people have responded well. Thank you. With that happy note, I'm ending the meeting for all. Thank you, everyone.